ओके स्टूडेंट्स समस्त सुनि पारछो हाँ सर जहाँ भी शॉर्ट नोट अच्छे आज पढ़ा है फास्ट अच्छे तुम ग्रीन हाउस इफेक्ट तो तुमको क्लास में कहला तथापि कहूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन अंडर नॉर्मल कंडीशन द सरफेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर maintain the heat by radiating solar energy back into space. However, when concentration of the carbon dioxide increases, it forms a thick cover and function like glass panels of greenhouse, preventing the heat from being radiated back. It is a characteristic of carbon dioxide to trap long wave radiations. This heating effect is called greenhouse effect. So, Earth atmosphere behaves like big greenhouse gas. Big greenhouse gas. It traps heat and little bit gas like carbon dioxide, methane gas, etc. The sun rays passes straight through the greenhouse gas and warms the earth. The warming of the planet is of the heat energy which radiates out towards space, and some outgoing radiation does not pass through the atmosphere but reflected back on the earth effectively, trapping heat like greenhouse gas, keeping the planet earth. Earth temperature ଯେତେବେଳେ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड मिथेन गैस ए गैस रो मात्रा बढ़ुची सेतेबेले कोन होची आर्थ रो सरफेस पे ग्रीन हाउस गोटे ग्लास पैनल ता सृष्टि होची जा देखि हीट एनर्जी ता रेडिएट होची जदि कार्बन डाइऑक्साइड रो मात्रा बढ़ुची हीट एनर्जी this increases temperature of the atmosphere and causes सुबह जाओ ना सर heat जब पहुंची ताले हेलो हाँ सर समस्त सुबुजी सर क्लियर होनी क्लियर होनी हाँ सर under normal condition the surface of earth atmosphere maintains the heat by radiating solar energy under normal condition the surface of earth atmosphere maintains the heat by radiating solar energy back into space. However, when concentration of the carbon dioxide increases, जेतले कार्बन डाइऑक्साइड रो मात्रा बढ़ुची सेतेबेले हीट एनर्जी ता बढ़ुची and function like glass panel सेतेबेले glass panel गोटे सृष्टि होची atmosphere रे of greenhouse preventing the heat from radiated back. It is the characteristics of carbon dioxide to trap long wave radiation. This heating effect is called greenhouse. जेतेबेले कार्बन डाइऑक्साइड रो मात्रा बढ़ुची सेतेबेले atmosphere रे greenhouse effect ता सृष्टि होची. This increases in temperature of earth atmosphere and causes global warming. फलरे earth रो temperature ता increase होची फलरे global warming होची by 2 to 3 degree centigrade. सेतेबेले atmosphere temperature ता 2 ରୁ 3 degree बढ़ुची. Would cause melting of ice in pole and flood in coastal area. फलरे जेतेबेले earth रो temperature ता बढ़ुची सेतेबेले ice ता melt होची. Melt हबा फलरे coastal area जाकरे flood सृष्टि होबार संभावना रहउची. The carbon dioxide and other greenhouse gases like methane, nitrogen oxide, chlorofluorocarbon are constantly increasing beyond the permissible limit, which contribute to greenhouse gas. विभिन्न प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मिथेन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जदि मात्रा बढ़ुची ताले वायुमंडल रे ग्रीनहाउस इफेक्ट हबो. नेक्स्ट है एसिड रेन. Oxides of nitrogen and sulfur are two main gaseous pollutants produced by burning of fossil fuel in power plants, domestic fires, automobiles exhaust, etc. So there are two main gases which are responsible for acid rain. These gases are oxides of nitrogen and sulfur. These gas in burning of fossil fuels in power plants, domestic fires, automobile exhaust, etc. These oxides swept into atmosphere, travel thousands of kilometers and get oxidized into H2SO4 and NO3. जो oxides of nitrogen और sulfur oxides of sulfur gas जाको जदि वायुमंडल जाई के बेसुची ताले से sulfuric acid और nitric acid सृष्टि करूची. These acids are dissolved in atmospheric water and fall in the ground as acid rain. फलरे से कोन होची
एसिड रेन आकार रे तल पृथ्वी पृष्ठ को पड़ुची ऑन द एवरेज 60 to 7% of earth acidity is ascribed to H2SO4 and 30 to 40% HNO3. It increases the acidity of soil, thus affect land, flora and fauna, human being and monuments. फल एसिड रेन आकार रे पृथ्वी पृष्ठ रे पड़ुची फल विभिन्न प्रकार फ्लोरा फौना पर तार इफेक्ट पड़ुची ଫନା ମାନେ କଣ ସାର୍? ଫ୍ଲୋରା ଫନା ମିନିଂ हेलो सुनो यूट्रोफिकेशन होची the excessive richness of nutrients in aquatic ecosystem such as lake pond etc बा लेक रे बढ़ुची ताहाले सेडा यूट्रोफिकेशन होची सेडा को हमें यूट्रोफिकेशन कहबा excessive nutrients like phosphorus, nitrogen and other plant nutrients enter the ecosystem primarily from cow manure, agriculture, fertilizer, detergents and human waste run off land into rivers. Nutrients like phosphorus, nitrogen and other plant nutrients enter into the ecosystem primarily from ए जाको केमिति जाउची ना इकोसिस्टम केमिति एंट्री करची ना विभिन्न प्रकार माने जो एग्रीकल्चर फील्ड रे विभिन्न प्रकार खत यूज करछे किबा सार यूज करछे किबा फर्टिलाइजर यूज करछे ये जाय कि वाटर सहित मिसुची वाटर बॉडी सहित मिसुची फल रे वाटर रो बॉडी सहित मिसिया फल रे कोन होची ना वाटर रो ऑक्सीजन कैपेसिटी टा को कमे दोची the productivity of such an ecosystem naturally increases it promote the growth of algae फल रे ऑक्सीजन वाटर रो कैपेसिटी टा कमे दोची आ algae माने ग्रो करछन they take oxygen from the water causing the death of fish फल रे कोन होची ना ऑक्सीजन रा कैपेसिटी टा कमी जाउची वाटर रे तो फल रे वाटर रे थिबा विभिन्न प्रकार फिश किबा एक्वाटिक एनिमल को मरि जाउछन ए प्रोसेस को कहबा हमें यूट्रोफिकेशन जोटा कि एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जदी वाटर बॉडी रे बढ़ुची ताले ये विभिन्न प्रकार इफेक्ट पकोची एक्वाटिक एनिमल ऊपर एक्वाटिक प्लांट ऊपर आर इफेक्ट पड़ुची बा एक्वाटिक प्लांट ऊपर आर इफेक्ट पड़ुची एटा को हमें कहबा यूट्रोफिकेशन नेक्स्ट हला बायोमैग्निफिकेशन increase in concentration of non degradable pollutant when it passes through successive trophic level in the food chain जतबेले non biodegradable pollutant जेमिति कि DDT हो किबा विभिन्न प्रकार पेस्टिसाइड हो आमे जो यूज करूचे ये जति जाय कि फूड चेन सहित मिसुची ताले ये आर इफेक्ट टा को कहबा हमें बायोमैग्निफिकेशन DDT is used to kill pests in crop fields when rainwater flows over this field the DDT enters into the pond जो एग्रीकल्चर फील्ड रे DDT यूज करतले रेनवाटर हबो एटा जाय कि पॉन्ड रे मिसिबो इट अब्सॉर्ब बाय प्रोड्यूस एंड प्रोसेसेस थ्रू सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन ये कोन करबो सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल रे जाय कि मिसिबो it has been observed that concentration of DDT increases gradually and its accumulation is highest at the trophic level our accumulation the highest at trophic level similarly concentration of Hg increases when it passes through food chain मर्क्यूरी रो मात्रा जदी बढ़ुची सेडा मध्ये इफेक्ट पडुची विभिन्न प्रकार इफेक्ट पडुची एडा बायोमैग्निफिकेशन हेलो crop plants from pest and pathogen are called agrochemicals agrochemicals गुडा को होची आमे जो विभिन्न प्रकार एग्रीकल्चर फील्ड रे विभिन्न प्रकार पेस्टिसाइड जाको यूज करूचे
ए जाको हमें कहबा एग्रोकेमिकल्स chemicals that are used for maximizing productivity of crop plants by providing essential nutrients or by protecting the crop plants from pest and pathogen and called agrochemicals हमें एग्रीकल्चर फील्ड रे विभिन्न प्रकार केमिकल जो यूज करूचे पैथोजन को अटैक न करिया पई किबा पेस्ट अटैक न करिया पई एग्रीकल्चर फील्ड रे सेजा को कहबा हमें एग्रोकेमिकल्स in the wake of green revolution जेतेबेले ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हेतिला यूज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सेतेबेले इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड हैज इंक्रीज मेनफोल्ड फॉर एनहांसिंग क्रॉप प्रोडक्शन सेतेबेले एग्रीकल्चरल फील्ड रे विभिन्न प्रकार फर्टिलाइजर बा कीटनाशक ए जाकर यूज अधिक बढ़ी जाय पेस्टिसाइड हर्बिसाइड या फंगिसाइड्स एसेट्रा आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड सेतेबेले कोन होय छै ना विभिन्न प्रकार कीटनाशक किबा तृणनाशक एग्रीकल्चर फील्ड रे यूज टा बढ़ी जाय these incidentally are also toxic to non-target organism that are important component of soil ecosystem ei pesticide jako use kariba phalare bibhinna prakara insect jako ei pesticide jako mari diyanti we know what the addition of increasing amounts of chemical ame mane jani che jodi ame chemical fertilizer jako agriculture field re use kariba tale eutrophication hobo the current problem in agriculture are therefore extremely grave फल आम जो एक्सेस अमाउंट रो कीटनाशक बा यूज करूचे एडा हम ऊपर बहुत इफेक्ट आम खाद्य ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ुची खाद्य ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ुची नेक्स्ट अछि हमर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट The term solid waste management mainly refers to complete process of collecting, treating and disposing of solid waste. Solid waste management होची आमे solid waste विभिन्न प्रकार municipality waste ए जाको collect करिबा treating करिबा dispose मध्य करिबा in the waste management process the waste are collected from the different source and are deposited waste management process रे विभिन्न प्रकार solid waste जाको collect करा जाय और deposit करा जाय this process includes transportation analysis legal procedure along with monitoring and enforcing regulation ए जाका हमें transportation करिबा analysis करिबा और ठीक रे monitoring करिके आकु dispose करिबा there are a number of principles related to waste management system but generally accepted concept is waste management or hierarchy of waste management विभिन्न प्रकार waste management system अछि किंतु सेथरु waste hierarchy होछि सबटु important waste management system solid waste management is very much essential to maintain hygiene आमे solid waste management गोटे hygiene environment maintain करिबा पई आमे solid waste management करिबा नेक्स्ट अछि radioactive waste management radioactive waste are the waste emanating from a nuclear power plant or medical laboratory radioactive waste जाको साधारण radioactive waste जाको साधारणतः तमरो मेडिकल न्यूक्लियर पावर प्लांट किबा मेडिकल लैबोरेटरी रु वेस्ट जाको बाहर से जाको हमें कहबा radioactive waste they contain radioactive materials एमाने radioactive materials contain करंती that are hazardous to most forms of life ए जाको hazardous थाए हला विभिन्न प्रकार hazardous substance थाए the waste decay over the course of time so they would be confined to safe place until the time they lose their radioactivity and no longer pose a threat to environment ए जाको dispose न करिबा ताले आर इफेक्ट रा हम ऊपर पड़िबो nearly 30% of the population were either burned or killed by the radiation caused by bomb and other 30% were seriously injured 30% लोक माने रेडियोएक्टिव वेस्ट पॉल्यूशन जेमिति कि बम एक्सप्लोजन हो किबा विभिन्न प्रकार रेडियोएक्टिव टेस्ट हो फल रे इंजरी होउची नेक्स्ट अछि deforestation can be defined as the large scale removal of trees from forest from the facilitation of human activities deforestation होची आमे जदी गछ जाक जंगल जाक काटी के नष्ट करबा ह्यूमन मानकर एक्टिविटी पई से प्रोसेस को कहबा हमें deforestation it is a serious environmental concern एटा होची गोटे serious environmental problem it can result in the loss of biodiversity जदी आमे गछ काटी के नष्ट करछे ताले एटा biodiversity loss होबो
natural habitat lost hobo plant animal manakar disturbance in the water cycle disturbance hobo murtika khaya hobo deforestation also a contributor to climate change and global warming deforestation folare climate change hobo global warming hobo we should carefully planning and construct infrastructure in order to minimize the loss of forest area आम फल जंगल नष्ट करबा नाही फल हमको जंगल नष्ट न कले हमको विभिन्न प्रकार फायदा मिलिबो।